Hello, beta. In today's lecture, we are going to go ahead and we are going to talk about two things. About what are the arguments in favor of trade, क्यों trade होना चाहिए, and what are the arguments against trade, क्यों trade नहीं होना चाहिए, free trade नहीं होना चाहिए. We will be going ahead and we will be looking at those arguments today in this chapter. ठीक है? So the first thing that we want to go ahead and we want to understand, please write down arguments in favor of free trade. तो इसमें हम इस बारे में बात करेंगे कि कौन से वो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो फ्री ट्रेड प्रमोट करते हैं, फ्री ट्रेड क्यों होना चाहिए, व्हाई फ्री ट्रेड शुड टेक प्लेस. वी विल गो अहेड एंड टॉक अबाउट दैट. ठीक है. नाउ वी हैव सीन दैट very few countries have complete free trade. पूरा free trade तो कहीं पे भी नहीं है, right? But they are moving towards free trade. But what do we suggest? किस रीजन की वजह से फ्री ट्रेड होना चाहिए? So there are three reasons. Reason number one, beta, that is free trade and efficiency. Free trade and efficiency. What does free trade and efficiency suggest? So let us go ahead and let us take the case of a small country. Okay. It basically simply is the reverse of cost benefit analysis of tariff. हम इस केस में क्या देख रहे हैं? हम इस केस में ये देख रहे हैं कि अगर हम टैरिफ करते हैं वर्सेस हम टैरिफ नहीं करते हैं, तो क्या टैरिफ से हटने पर क्या होता है और टैरिफ लगाने पर क्या होता है. वी आर जस्ट डूइंग दैट एनालिसिस इन दिस केस. सो प्लीज राइट डाउन द एफिशिएंसी केस for free trade is simply reverse of cost benefit analysis of a tariff. Cost benefit analysis of a tariff. ठीक है. तो हमें पता है कि whenever we have tariff, we have seen this, that a tariff causes loss to the economy. ठीक है. It distorts the economic incentive of both producer and consumer. दोनों के ही economic incentive distort हो जाते हैं. So conversely, if we move away from tariff, if we move towards free trade, तो वो distortion will be eliminated. And if those distortions will be eliminated, automatically national welfare will increase. So please say that tariff causes both. तो you remember हमने दो triangles निकाले थे tariff वाले. So it causes both production and consumption distortion. Right? Now, if you move away from tariff, अगर आप एक tariff से हट जाओ, ठीक है, तो automatically वो जो भी distortion है वो हट जाएंगे. So conversely, a move to free trade eliminates these distortions and hence increases national welfare.
तो अगर हम टैरिफ से अगर टैरिफ हटाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो भी हमारे लॉस हो रहे थे, एफिशिएंसी लॉसेस, दे वुड बी एलिमिनेटेड एंड ऑटोमेटिकली वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स अ बेटर इकोनॉमी. ठीक है. टू शो दिस यू वुड हैव रिमेम्बर्ड दिस ग्राफ बेटा फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स. आपको ये ग्राफ याद होगा. दिस इज डिमांड सप्लाई. ठीक है. दिस इज बेटा वर्ल्ड प्राइस प्लस टैरिफ, और ये था वर्ल्ड प्राइस. ठीक है. तो व्हेन वी हैड टैरिफ तो दो तरीके के डिस्टॉर्शंस हो रहे थे. देयर वर टू डिस्टॉर्शंस. वन वाज दिस वन, है कि नहीं, एंड वन वाज दिस वन. राइट बेटा. दिस वाज कॉल्ड योर प्रोडक्शन डिस्टॉर्शन, एंड ये बन रहा था आपका कंजम्पशन distortion, right? So please write down that a trade restriction like tariff causes production and consumption distortions. Right? It causes production and consumption distortion. So when you remove tariff, जब आप tariff हटा देते हो, automatically these distortions they are going away. ठीक है. Tariff causes inefficiency, and जब tariff हट जाएगा, when it will be free trade, it will be beneficial for the country. ठीक है. So we have some data also with us, right? And that data shows what is the benefit when you move towards free trade. अगर आप free trade की तरफ जाओ तो आपको दिखेगा कि benefit जो है वो increase हो रहा है, right? So this is a small table बेटा. Benefit of moving towards free trade, है कि नहीं है? So I am just putting some countries here. US, European Union, ठीक है, Japan, some developing countries, world as a whole. ठीक है. So when you move towards free trade as a percentage of GDP, the benefit in US was 0.57, 0.61, 0.85, 1.4, 0.93, 0.93. ठीक है. So this shows somehow that when you move towards free trade, it is beneficial for the countries. Countries benefit करती हैं जब free trade की तरफ जाती हैं. That's the first reason why you should be moving towards free trade. ठीक है. Reason number 2 बेटा, which is additional gains from free trade. Additional gains from free trade. ठीक है. अब बेसिकली एडिशनल गेन्स फ्रॉम फ्री ट्रेड क्या बोलता है कि जब फ्री ट्रेड होता है, जब ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हट जाती हैं तो बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ती है गुड्स की, जिसकी वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो जाता है, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से प्राइजेस लोअर हो जाते हैं, प्राइजेस आर लोअर्ड, राइट? सो देयरफॉर इट इज अ वेरी गुड थिंग for the economy that you have free trade, because it enhances the economies of scale. प्लस जब फ्री ट्रेड होता है, जब आप इधर उधर से देखते हो कि ये ये चीज बन रही है, वो चीज भी बन रही है, इट बेसिकली गोज अहेड एंड इट क्रिएट्स इनोवेशन, राइट? इट गोज अहेड एंड इट बेसिकली लीड्स टू न्यू वेज टू, क्योंकि
अब आपको दिख रहा है फ्री ट्रेड है, बाहर से कोई एक नई चीज आ रही है, सो नाउ यू ऑल्सो वॉन्ट टू इनोवेट, right? You also want to compete in better ways, right? So free trade leads to two things: economies of scale, innovation, better learning. That is why it is good, right? तो लिखो बेटा मेरे साथ, please write it down with me. First, economies of scale, right? Trade restrictions fragment production and result in too many firms entering the market. ट्रेड रिस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होता है, बहुत सारे फर्म्स मार्केट में एंटर कर जाते हैं, और क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड है तो आप बाहर के साथ ज्यादा कॉम्पीट भी नहीं कर पा रहे हो. फ्री ट्रेड रिजल्ट्स इन economies of scale. There are greater varieties available and prices are lower. तो फायदे देखो, प्लीज ट्राई टू सी. फर्स्ट, आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रहा है क्योंकि आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हो, ना ही सिर्फ अपनी कंट्री के लिए बट वर्ल्ड के लिए. सेकेंड, देर आर ग्रेटर वेराइटीज अवेलेबल, यू आर सेलिंग टू मोर पीपल बट यू आर ऑल्सो गेटिंग बेटर प्रोडक्ट्स. आपके पास चॉइस है कि एक क्लॉथ में, एक स्वेटर में, whether you want to wear Indian quality, US quality, UK quality, etc. And prices are lowered because of more competition in the market. जो prices होंगे market में वो भी कम होंगे, right? So this is the first one. Second, write down beta, learning and innovation. Right? So write down, free trade creates an incentive for the entrepreneurs to seek new ways to export and compete with imports. Right? So now, because of free trade, क्योंकि बाहर के प्रोडक्ट्स इजीली आपकी कंट्री में आ सकते हैं, you go ahead and you seek new ways to compete. आपको बाहर अपने प्रोडक्ट को बेचना है, और बेचने के लिए आपको कुछ इनोवेशन लाना पड़ेगा. You have to get new better ways to sell your product outside your country, right? For which you will bring innovation, right? For which you will learn better techniques. These are the additional gains from free trade. ठीक है. So now let us go ahead beta and let us talk about the next one, next reason free trade क्यों होना चाहिए, and that is called as rent seeking. ठीक है. Third one, rent seeking. Okay. Now what is rent seeking going ahead and saying? Rent seeking basically is saying that when imports are restricted with quota rather than a tariff, कॉस्ट इज मैग्नीफाइड. दो तरीके से हम इंपोर्ट्स को रोक सकते हैं. पहला तो हम कोटा लगा दें कि इससे ज्यादा आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते, 10 यूनिट से ऊपर यू कैन नॉट इंपोर्ट, दैट्स इंपोर्ट कोटा. एंड दूसरा है कि हम उस पर टैक्स लगा दें सो दैट द प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीजेस. व्हेन वी गो अहेड एंड व्हेन वी रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स विद कोटा, जब हम कोटा को यूज करके इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, देन द कॉस्ट इज मैग्नीफाइड, कॉस्ट बढ़ जाती है, and that is called as the process of rent seeking. उसी को हम rent seeking बोलते हैं. So when imports
are restricted with a quota rather than a tariff. The cost is sometimes magnified, right, by a process called rent seeking. इस प्रोसेस को ही हम रेंट सीकिंग बोलते हैं, ठीक है. नाउ what is import quota, beta? I have explained you. Import quota is where you have a fixed number where कि हम बोल देते हैं कि इससे ज्यादा हम import नहीं कर सकते. One famous example of this is India in 1950s and 1960s. तो जब हम इंडिया की बात करते हैं 1950s और 1960s में, हम क्या देखते हैं कि इस टाइम पे जो हमारी इंडियन कंपनीज थी वो इंपोर्टेड इनपुट तो खरीद सकती थी, ठीक है, बट इट वाज इन प्रोपोर्शन टू देयर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, ठीक है. तो अब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला कि यू कैन, सो इन प्लीज राइट डाउन फर्स्ट, इंडियन कंपनीज वर अलाउड to purchase imported inputs, but only in proportion to their installed capacity, ठीक है. मतलब अगर आपके पास एक पावर प्लांट है जो 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है तो उसके प्रपोर्शन में खरीदो. दो पावर प्लांट्स हैं जो इतना कर सकते हैं, उसके प्रपोर्शन में खरीदो. So now, because they knew that only if they have capital, government will allow them to import. What people started doing, what companies started doing is they started over investing. ठीक है. So this led to over investment. It led to over investment, ठीक है. जैसे अगर एक स्टील कंपनी को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस चाहिए तो वो उससे ज्यादा करेगी ताकि उसको इंपोर्ट लाइसेंस मिल पाए, ठीक है. नाउ बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज दे स्टार्टेड ओवर इन्वेस्टिंग, क्योंकि वो ओवर इन्वेस्ट कर रहे थे, व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग बेटा, बिकॉज ऑफ दिस वी स्टार्टेड सीइंग दैट देयर वाज इंक्रीज इन द कॉस्ट दैट दे वर इनकरिंग. अगर ओवर इन्वेस्टमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट इनकर कर रहे होंगे, वट एवर कॉस्ट दे वुड बी इनकरिंग विड ऑल्सो इंक्रीज, right, isn't it? So this is basically what started happening, right? So this led to distortions. अगर भाई मेरे को एक पर्टिकुलर डिमांड को फुलफिल करना है बट मैं उससे ज्यादा ओवर इन्वेस्ट कर रही हूँ कि आई गेट द राइट अमाउंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, right? So in this case what is going to happen, it is going to go ahead and it is going to lead to idle capacity. मेरे को उतने पावर प्लांट्स का जरूरत नहीं है, I am just installing them so that I can get enough inputs, right? So this led to building the idle capacity, which was an inefficient thing to be done. समझ रहे हो? So this led to idle capacity and hence inefficiency. Right? So this is what is called as rent seeking. Okay. Okay. Write down the fourth one, beta. Political argument
for free trade. Political argument for free trade. Political argument for free trade says कि अगर हम फ्री ट्रेड के अलावा कुछ भी फॉलो करते हैं तो वो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, ठीक है। उसमें क्या हो सकता है कि कोई ना कोई इंटरेस्ट ग्रुप, इंटरनेशनल इंटरेस्ट ग्रुप, जैसे फॉर एग्जांपल सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन कम एंड कैन चैलेंज दैट इकोनॉमी, कैन चैलेंज द पॉलिटिशियंस ऑफ दैट इकोनॉमी। सो जो पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं दे आर एक्चुअली कमिटेड to go ahead and to follow free trade, right? They don't want to go ahead and they don't want to deviate from free trade, right? So please write down any deviation to pursue deviations, any attempt, sorry, any attempt to pursue deviations from free trade is subverted by political process. अगर आप डिविएट करना भी चाहोगे तो पॉलिटिकली वो करेक्ट नहीं होगा फ्री ट्रेड से हटना, राइट? सो प्लीज राइट डाउन एनी इंटरवेंशन in trade is usually captured by interest groups and converted into a device for redistributing income to politically influential sector. है ना? सो बेसिकली ये बोला जाता है कि अगर हम फ्री ट्रेड से डिविएट करेंगे, इफ वी विल बी डिविएटिंग बाय फ्री ट्रेड, सो इकोनॉमिस्ट शो दैट एक्चुअली it goes ahead and it it takes money from the from the right people to the wrong people, ठीक है। माने इन्फ्लुएंशियल लोगों के पास पैसा जा रहा है, ठीक है। सो अगर गलत हाथों में पैसा जा रहा है और जब हम फ्री ट्रेड फॉलो नहीं कर रहे हैं, देयरफॉर फ्री ट्रेड इज बेटर टू बी फॉलोड, राइट? इट इज बेटर टू एडवोकेट फॉर फ्री ट्रेड because otherwise it is going to wrong set of people, the money is going in the hand of wrong set of people, right? So therefore जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज भी होती हैं they should be going ahead and they should be following a commitment towards free trade, right? So hence a political commitment to free trade is not a bad idea, है ना? तो फ्री ट्रेड करना बुरी बात नहीं होगी बिकॉज दैट इज गोइंग टू एक्चुअली इंश्योर दैट मनी इज इन द राइट हैंड्स, ठीक है। सो दीज आर द these are the few reasons why we have arguments in favor of free trade. अब हम बात करते हैं बेटा arguments against free trades, against free trade. Right? So when we talk about argument against free trade, तो ये बहुत लोग बोलते हैं कि अगर हम फ्री ट्रेड करेंगे तो वो नेशनल वेलफेयर के अगेंस्ट होगा, राइट? सो द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट फ्री ट्रेड इज टर्म ऑफ ट्रेड आर्ग्यूमेंट. Okay, now we know that when we talk about a large country, right?
अच्छा, why do I talk about large and small country? मैंने आपको बताया in the last chapter that when we talk about large country is able to affect terms of trade, right? Whereas small country is not able to affect term of trade. ठीक है? So therefore I want to talk about large country. जब हम term of trade argument का बात करते हैं, it is good to talk about a large country. It should be mentioned that it's a large country. So please write down, in case of a large country, there are terms of trade, gain of a tariff, which when out weighs the distortion losses, leads to net increase in welfare. So we have seen this in the previous lecture कि जब हम large country का बात करते हैं, when we talk about a large country, there are two things. One, there are distortions from free trade, and second, there is benefit from free trade. और ऐसा हो सकता है कि एक लार्ज कंट्री जो है उसको जो बेनिफिट्स हैं वो डिस्टॉर्शन से ज्यादा हो. द बेनिफिट्स आउटवे द डिस्टॉर्शंस. And if the benefit, they go ahead and they outweigh the distortion, then basically what is going to go ahead and what is going to happen? It is going to go ahead and it is going to lead to your benefit, welfare increase in the economy. है ना? उससे welfare आपका economy का increase हो सकता है. Is that making sense? So please write down, for a large country, there is an optimum tariff to at which the marginal gains from improved term of trade just equal to marginal efficiency loss from production and consumption distortion. So what we can do, beta, is that we can go ahead and we can create an optimal tariff. ठीक है? ऑप्टिमल टैरिफ कौन सा वो टैरिफ है? ऑप्टिमल टैरिफ वो टैरिफ है जिसमें जो मार्जिनल गेन है, ठीक है, जो मार्जिनल गेन है जब टर्म ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो रहा है, और जो मार्जिनल एफिशिएंसी लॉस है, वो दोनों एकदम बराबर हो जाए, गेन और लॉस एकदम बराबर हो जाए, तो वो जो टैरिफ होता है उसी को हम ऑप्टिमल टैरिफ बोलते हैं. राइट? दैट इज कॉल्ड एज optimal tariff. This is the tariff. This optimal tariff. This optimal tariff is the tariff rate that maximizes national welfare. बेटा ये वो टैरिफ है जो आपके नेशनल वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सकता है. ठीक है? सो वी कैन गो अहेड एंड वी कैन ऑल्सो शो द ऑप्टिमल टैरिफ ग्राफिकली ऑल्सो. राइट? हम इसको